हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ अकेडमी। तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, दैट इज ऑन डिफरेंशियबिलिटी, है ना। हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं। ओके, तो लेट्स शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करते हैं, उसके बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो लेट्स फर्स्ट एग्जांपल इज व्हाट they have just asking key so that the function x sin 1 by x is differentiable. Okay, so example first, so that this is a so that the function, this is the function defined like this is fx is just equal to, this is your x sin 1 by x when x is non-zero, and it's zero when this x is equal. Okay, so it's continuous but not differentiable, but not different. Differentiable at x is equal to 0. तो यह जो पॉइंट है हमारे पास x इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं। जैसे कि अगर खाली आपसे बोलता कि आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करिए, तो आप डिफरेंशिएबिलिटी पहले चेक कर लेते, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है ना। तो बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि वो कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वी विल जस्ट check first continuity, then we will go for differentiability. Okay, so let's write the solution of this problem. So here अगर हम फंक्शन की वैल्यू बात करें, here when x is equals to 0, the value of the function is 0. It means that f of 0 is just equal to 0, है ना। फंक्शन की जो वैल्यू है 0 पॉइंट पे, वो तुम्हारे पास 0 है, just to 0. ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, so this is a limit when this is x tending to 0 minus, or this is your function is your x sin 1 by x. Okay, so clearly we can form in h form में ऐसे हम बदल लेते हैं, this is h is tending to 0, and in the place of this x you can put 0 minus h, and this is the sign of, this is 1 upon minus of h. So when you just write here limit h tending to 0, you can see कि minus h is here, or sign of minus theta is equals to minus of sin theta. Okay, so we can just here, this is your h sin 1 by h. Okay, and now when you apply it here h tending to 0, so we will get this is 0, and this sin 1 by h something finite value, ध्यान रखिएगा, because we know that this sin x is less or equal to 1 and greater equal to minus. When this h tending to 0, this 1 by h will be tending to infinity, so we don't know what will be the value actually. हमें ये नहीं पता कि साइन की वैल्यू क्या होगी, बट जो भी आएगी वो फाइनाइट वैल्यू आएगी। एंड हियर दिस h is tending to 0, then this will becomes like a 0. तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा कोई फाइनाइट वैल्यू, we will get 0 है। ओके, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज योर 0। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो दिस विल बी योर लिमिट x tending to 0 plus of x sin 1 upon. ओके, तो यहाँ पर जब हम x टेंडिंग टू 0 प्लस की तरफ से जाते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं लिमिट, दिस इज योर h टेंडिंग टू 0, and this is your h, and this is sin 1 upon h, and already we have done, so this is again a limit 0. So here we saw
कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो 0 आ रही है, दैट इज आल्सो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. So this is the condition, this is the definition for continuity at a point 0. तो यहाँ पर लिखो, since left hand limit at x equals to 0 and right hand limit is just equal to 0, that is value of the function at that point. Uh, this implies function is continuous at x is equal to 0. So it implies the given function is continuous at x is equal to 0. ओके, कॉन्टिन्यूटी तो हमने प्रूव कर लिया. अब हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं. तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं. ओके, so for differentiability, this is your you can say left hand derivative. So left hand derivative, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, एल एफ डैश ऑफ ए. ओके, या यू कैन से ए मतलब यहाँ पर 0 पॉइंट है ना, तो यू कैन जस्ट से लाइक दिस, दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0, दिस इज योर एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 माइनस एच, बिकॉज है हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना. तो दिस इज 0 माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 एंड डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ. क्लियर? तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, दिस इज योर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और जहां पर हमारे पास फंक्शन है, क्या फंक्शन, तो हमारे पास ये है ना एक्स साइन 1/x. तो यहाँ पर हम माइनस का एच पुट करेंगे, दिस इज माइनस ऑफ एच, दिस इज अ साइन -1/h and minus का 0 and divided by minus of. ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड यू विल गेट हेयर दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0. और यहाँ पर जो है तुम्हारे पास एच से एच को आप कैंसिल कर सकते हो, तो यू विल गेट माइनस टाइम्स ऑफ साइन 1/. क्लियर? इट दिस थिंग यू विल गेट. तो एक चीज है कि यहाँ पर जो जब हम एच टेंडिंग टू 0 अप्लाई करेंगे, तो 1/h टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा. जब 1/h इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो साइन का वैल्यू फाइनाइट जरूर होगा, बट वी कांट से कि होगा क्या, है ना, क्या वैल्यू आएगी. तो दिस इज यू कैन से डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, इसको हम हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं करता. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता. सिमिलरली जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने जाएंगे वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब एक ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और बोथ विल बी इक्वल, दोनों हमारे इक्वल होना चाहिए. बट यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करना. ध्यान रखिएगा कि व्हेन दिस यू कैन जस्ट से कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज साइन ऑफ x. ठीक है, दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों? क्योंकि हमको ये तो पता है कि इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी, बट क्या आएगी वी डोंट नो. एट द इंफिनिटी व्हाट द वैल्यू ऑफ द x यू डोंट नो, इसलिए इसको हम ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. तो दिस इंप्लाइड, so you can also say for this some value, a finite value which lies between -1 to 1 but does not exist. You can say this is a finite value quantity, finite quantity uh, lying between
between -1 and 1, but does not exist. Does not exist. Does not exist. Does not tend to a unique one. Okay. So this implies given function is not differentiable at x is equal to, तो जो फंक्शन है x sin 1 by x इज डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, बट इट इज कॉन्टिन्यूअस इन फैक्ट. ओके. So let us see another problem. Example number 2. एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमारा जो फंक्शन लिया गया है दैट इज so that fx which is equals to mod of x minus 1 is continuous but not differentiable at x is equals to 1. Okay, so let us see कि कंटिन्यूटी चेक करेंगे फिर डिफरेंशिएबिलिटी. तो ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दिस इज एफएक्स, दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन है ना, मॉड फंक्शन एक्चुअली. तो मॉड फंक्शन हमारा जो पीसेस में ओपन होता है कुछ इस तरीके से, दिस मॉडुलस वैल्यू विल बी पॉजिटिव इफ x minus 1 is positive, if this x minus 1 is greater or equal to 0, and it opens with negative sign if x minus 1 is less than 0. Yeah, you can say here this is your x minus 1 is here, and x is greater or equal to 1, and this is your minus of x plus of 1, then this is your x is less than 1, not 0. ओके. तो इस तरीके से हमारे पास मॉडुलस फंक्शन ओपन होता है. तो आइए जरा देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव. सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं. ठीक है. तो फॉर continuity we can have value of the function at the point 1 is 0, because we will taken this one of the function x minus 1, so we will put this is 1 minus 1 and we will get 0. तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है. और अब लिमिट्स की हम बात करते हैं. तो इफ आई एम जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट, so that will be what, limit you can say this is your x tending to 1, and function when x is less than 1, so we will take this function minus x plus 1, so it will be minus x plus 1, and here you apply this is left hand limit actually. So limit when you convert in the h form, so this is h tending to 0, and जहां पर x है उसकी जगह पर 1 minus h आप रखेंगे, so you will put 1 minus h here and plus 1. Okay. So from here you will get this is limit h tending to 0, और यहाँ पर -1 +1 के साथ कैंसिल और माइनस माइनस प्लस का h हो जाएगा यहाँ पर. So when you put h is equals to 0 you will get 0. ओके. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके 0 आ गई. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं. राइट हैंड लिमिट दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ फंक्शन. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 दिस इज x माइनस. अच्छा, जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो अब डायरेक्ट अभी आप लिमिट को अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर.
यहाँ पर x की जगह 1 रख सकते हो, दिस विल बी 1 माइनस 1 इज विल बी 0, क्योंकि वही हमारे पास खुल के आ जाएगा जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस एच के फॉर्म में, यू विल गेट 0. So since this left hand limit is just equal to right hand limit, and that is equals to 0, which is equal to the value of the function at the point 1. So this implies function is continuous. This implies given function fx is just equal to mod of x minus 1 is continuous at x is equals to 1. ओके, अब हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं. तो लेट अस सी फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. Differentiability, we can have left hand derivative first. Left hand derivative, you can say like this, L dash F dash. 1 point पे हम चेक कर रहे हैं, so we can just write like this, limit h tending to 0, f of 1 minus h minus of f1 divided by minus of h. जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रखते हैं तो माइनस का h होता है. ओके, सो लेट अस राइट हियर लिमिट h टेंडिंग टू 0. अब इस केस में जो फंक्शन हम लेंगे यहाँ पर, वो हम लेफ्ट हैंड लेस देन 1 वाला लेंगे, दैट इज योर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1. तो यहाँ पर जहाँ पर x है उसकी जब पुट करेंगे 1 माइनस h, तो माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस h, एंड दिस इज प्लस का 1, एंड इसका वैल्यू तो 0 है, तो दिस इज माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ. तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, दिस इज अ लिमिट h टेंडिंग टू 0, एंड दिस इज माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ h, एंड minus of plus of 1 divided by minus. So this and this is cancelled, and you will get here s से s कैंसिल करेंगे तो आपको माइनस का 1 मिलेगा. ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास इसको LHT भी आप लोग बोल सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लाइक दिस. तो इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं. This is r f dash of 1 is just equal to limit h tending to 0 f of 1 plus h minus the f of 1 divided by. We are applying formula this right hand derivative. अगर किसी पॉइंट पे हम बात करते हैं तो क्या होता था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाई एच, है ना. ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, यही फार्मूला हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है, यूज कर रहे हैं. तो लेट अस सी, अब यहाँ पर फंक्शन जो होगा वो व्हेन 1 इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, उसके लिए x माइनस 1 वाला फार्मूला यूज करेंगे फार्मूले में. तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, and this is in the place of x we will put this is 1 plus h, 1 plus h और फिर माइनस का 1. ओके, ये पूरा फंक्शन हो गया और ये तो 0 आ गया, एंड डिवाइडेड बाय h. हियर वी कैन सी कि जो यहाँ पर फंक्शन लेना है वो हमको x माइनस 1 वाला. तो इस 1 से ये 1 कैंसिल, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट लिमिट h tending to 0 h upon h, and that will be equal to limit h tending to 0. तो ये 1 हो जाएगा, एंड you will get this. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास माइनस का 1 आया और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास प्लस का 1 आया. यू कैन जस्ट राइट, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equals to right hand derivative. This implies given function
given function, this fx is just equal to mod of x minus 1. It's not differentiable at x is equal to, ठीक है. So this, whenever this modulus function becomes 0, it means this was a short-page point. Short-page point, तो it means that उस point पे function हमारे पास differentiable नहीं होता, क्योंकि हम एक से ज्यादा tangents वहां पर draw कर सकते हैं. We need a unique tangent at that point. That means of differentiability. Okay, so the function fx is equals to mod of x minus 1 is not differentiable at x is equals to 1. So such point is called critical point as well. So in that point, अगर कहीं हमको मॉडुलस फंक्शन दिख जाए और जहां पर ये मॉड 0 बन रहा होता है उस पॉइंट पे, वो पॉइंट हमारा पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है. क्लियर? तो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. So let us see third example. Example 3 में क्या पूछा है? So that the function so that the function this is your fx is just equal to e to the power minus 1 upon x square sine 1 upon x when x is not equal to 0 is differentiable. It's differentiable at x is equal to 0. And hence find f dash, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू आपको पता है क्या. ठीक है, तो यहाँ पर x is not equal to 0, so what will the value at the function? इन्होंने दिया नहीं है, but that will be given that the value of the function at 0 is 0. This is taken. Mention करना भूल गए हैं, but here be taken the value of the function at 0 is 0, and we have to check the differentiability of the function at 0 point. Okay, so when x is not equals to 0, it means left hand derivative and right hand derivative जब हम निकाल रहे होंगे तो इस function को हम रखेंगे, and at the point where the function value is required we will take 0. Okay, so let us see how we do the problem. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं. लेट अस राइट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. At the point G. So similarly we will writing here like h tending to 0, and this is the f of 0 minus h, ऐसे लिखते हैं ना, a minus h minus the f0 divided by minus of h. Clear? So let us see कि हमारे पास क्या निकलेगा. This is your limit h tending to 0, and this is your function तुम्हारे पास क्या है, e की power minus 1 upon x square. So we can see here कि when you put in the place of x, this is minus of h, so it will be having minus 1 upon minus of h का square like this. Okay, and sine, this is the sine 1 upon minus of h, and this is 0. We are taking this is 0, and this is divided by minus. So what you got from here, this is simply, this is limit h tending to 0 minus of h का होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास e की पावर minus 1 upon, this is minus 1 upon h स्क्वायर ही रहेगा,
और ये साइन हमारे पास 1/h आ जाएगा। माइनस का 1 हम बाहर ले रहे हैं इस साइन साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा से, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -h। क्लियर। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हेयर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर -1/h², ये तो एक बचा, साइन 1/h ये हमारे पास, और डिवाइडेड बाई दिस इज, ये हमारे पास इतना रिमेनिंग बचा। ठीक है, दिस इज ऑफ -of h। ठीक है, तो हाउ वी विल डू दिस, लेट अस सी। तो यहाँ पर हमारे पास साइन 1/h है, और यहाँ पर e की पावर -1/h² है, और h है। अभी इस लिमिट को हमें कैलकुलेट करना है, तो वी विल यूज एक्सपेंशन हियर। हम एक्सपेंशन e की पावर x का एक्सपेंशन यूज करेंगे। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, दिस इज योर 1 प्लस का x प्लस का x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। So this is expansion of e की पावर x। ओके, तो लेट अस यूज दिस एक्सपेंशन। तो उसके लिए हम e की पावर -1/h² है, इसको अपॉन में भेज दे रहे हैं, तो प्लस में हो जाएगी पावर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज योर साइन 1/h डिवाइडेड बाई दिस इज योर h e की पावर 1/h²। नाउ यू यूज योर एक्सपेंशन, so this is your limit of h tending to 0, this is your sine 1/h divided by 1 डिवाइडेड बाई दिस इज जो h, और इसमें एक्सपेंशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1x सीधे 1/h², तो 1/h² प्लस दिस इज 1/फैक्टोरियल 2 1/h² का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 1/फैक्टोरियल 3 एंड दिस इज 1/h² का होल क्यूब, एंड सो दिस एक्सपेंशन वी हैव यूज्ड। ओके, तो देखिए जरा व्हाट वी विल गेट हियर। When we just h multiplied here, so this will be limit h tending to 0 sine 1/h, इस जो h है इसको अंदर डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो विल we have h, and this is your 1/h, and plus this is 1/फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर h की पावर 4 होगा, तो जब h मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/h³ बचेगा, है ना, एंड प्लस 1/फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर 3 to the 6, तो यहाँ पर बचेगा 1/h की पावर 5। अब एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा बहुत बारीकी से, कि जब हम h इसको टेंडिंग टू 0 आप अप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, सॉरी ये टर्म 0, और ये इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, इट मीन दैट वी हैव लुक्स लाइक दिस, और साइन 1/h टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब 1/h जो है इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो ये कुछ भी हो, मतलब एंगल कुछ भी हो, साइन हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा। तो यू कैन सी लाइक दिस, यू कैन से कि अपर साइड में एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। अब क्या आएगी ये नहीं पता हमको, आई डोंट नो, बट बिकॉज -1 और 1 के बीच में साइन की वैल्यू है, तो एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, और नीचे हमारे पास ये तो 0 हो गया टर्म, बाकी और सारे इंफिनिटी, तो हमारे पास आ जाएगा इंफिनिटी। तो फाइनाइट अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो हेयर वी विल गेट 0 है। ओके, तो जो लेफ्ट हैंड हमारे पास डेरिवेटिव आया है वो हमारे पास 0 आया। आइए जरा अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। समझ में आ गया ना, ये हमारे पास जैसे साइन है, तो साइन एक फाइनाइट वैल्यू देगा, अपॉन में जब एस टेंडिंग टू 0 करेंगे तो इंफिनिटी आ जाएगा, तो फाइनाइट अपॉन इंफिनिटी यू गिव द 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की हम बात कर लेते हैं। दिस इज आर एफ डैश ऑफ, इस पॉइंट पे 0 पे चेक करें, एंड दैट इज टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, this is the f of 0 plus h minus the f of 0 divided by h। तो इसमें जब आप पुट करेंगे h की वैल्यू, तो हमारे पास दिस इज योर लिमिट h टेंडिंग टू
0, or this will be e की power minus 1 upon h square into sin 1 upon h minus का 0 divided by h। फिर से हमारे पास वैसे ही बिल्कुल सिमिलर लिमिट बन गई, और वी विल अगेन एबल टू कैलकुलेट दिस लिमिट। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास sin 1 upon h, and you can see like this is h e की power 1 upon h, and that is equal to 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारे पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों हमारे 0 आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो we have left hand derivative f dash at the point 0 is just equal to right hand derivative at the point 0, and this value is 0, some finite, this is finitely existent. So this implies given function that is your fx is equals to e to power minus 1 upon x square, and this is sin 1 upon, ठीक है, ये फंक्शन था आपका e की पावर minus 1 upon x square sin 1 upon x is differentiable at x is equals to, क्लियर। तो होप तो कि समझ में आया होगा कि कैसे हमारे पास हम डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर रहे हैं, कैसे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है कि टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी of the function, test the differentiability of the function, this is your fx is just equal to x tan inverse 1 upon x when x is not equal to 0, and it will be equal to 0 when x is equal to 0। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है 0 पॉइंट पे, और हमारे पास बाकी फंक्शन हमारा डिफाइंड है x tan इनवर्स 1 upon x। ओके, तो डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करना है किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0। लेट अस सी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर the solution here। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं, r f dash 0, clearly we know that this is a limit h tending to 0 f of 0 plus h minus the f0 divided by h। so this is the limit h tending to 0। तो यहाँ पर हम जहाँ h है रखेंगे, this is your h tan inverse, this is 1 upon h minus 0 divided by h। So from here you will get this is h is h cancelled, this is the limit h tending to 0, and this is what actually tan inverse 1 upon h। And one thing we know, when this limit x tending to 0 from plus from positive side, ठीक है, from positive side, this is positive, यहाँ पर h is tending to 0 from positive side because we are taking it is positive number and which is tending towards 0, so we are tending this is from positive side, then 1 upon h will be tending to plus 0। okay, similarly if I am just taking limit x tending to 0 from negative side, then 1 upon h will be tending to minus 6। this is acceptable x। okay, तो यहाँ पर h is some positive number, और अगर ये पॉजिटिव नंबर है tending to 0 and tan inverse 1 upon h is there, so this will be, you can say this is tan inverse
प्लस इन्फिनिटी। और यू नो दैट कि व्हेन दिस हमारे पास टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, 5/2 से। तो यहाँ पर जो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा दैट इज इक्वल टू 5/2 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, f डैश 0 की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड f ऑफ 0 माइनस h f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज योर लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 फंक्शन तो वही रहेगा, x जब माइनस का h हो जाएगा, माइनस का h, एंड दिस इज योर tan इनवर्स, एंड दिस और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम माइनस लगा। ठीक, तो यहाँ पर माइनस का 1/h और माइनस का 0 डिवाइडेड बाई। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यू विल गेट हियर दिस इज लिमिट h tending to 0 and minus h cancel, so you will have tan inverse minus 1, है ना। and from here you will get tan inverse minus infinity। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी tan में किस पे होती है वैल्यू, -π/2 पे होती है। तो दिस इज -π/2। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो +π/2 आ रहा है, और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 0 पॉइंट पे दैट इज योर -π/2। ठीक है, तो आप इनको इक्वेशन भी कह सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यू कैन से फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 भी है। क्या है हमारे पास, दिस राइट हैंड डेरिवेटिव at 0 is not equal to left hand derivative, and therefore you can say, therefore fx is not differentiable, fx is not differentiable at x is equal to x बराबर 0 पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं। क्लियर, let us see another example, see another example। Example number 5, fourth example we have completed। Example number 5, discuss the continuity discuss the continuity discuss the continuity and differentiability of the following functions, of the following function। This is your fx is just equal to it is your x square when this for x is less than -2, and it is equal to 4 for x is greater or equal to -2 and less or equal to 2। Okay, and it's again x square is again x square when for this x is greater than 2 से बड़ा है तब भी x स्क्वायर है, 2 से छोटा है तब भी x स्क्वायर है, -2 से छोटा है तब भी x स्क्वायर है। और when the x is lies between -2 and 2 the function is defined to be 4। उस पॉइंट पे हमारा 4। तो हमें इनके जो इंड पॉइंट्स हैं -2
और 2, इस पे हमें डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। डिस्कस द कॉन्टिन्यू डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो अगर हम मान लो हमने कहा कि x इज लेस देन -2, तो x अगर -2 है तो उसके लिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर दिस। तो जब हमारे पास जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, इन्हीं पे हम चेक कर लेते हैं। तो थ्रू आउट द डोमेन द फंक्शन है, थ्रू आउट द रियल नंबर इट विल बी डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस। तो लेट अस सॉल्यूशन। अगर हमें, you can also write continuity the continuity and differentiability, continuity and differentiability is to be tested at x is equals to -2 and x is equals to, ठीक है। the function obviously continuous other than these points, continuous and differentiable at all other points। तो हमें केवल चेक करना है दो ही पॉइंट, एक तो x बराबर -2 है और दूसरा x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो लेट अस सी एट x इज इक्वल टू -2, एट बराबर -2 पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू की बात करें तो 4 होगा, क्योंकि x इज when x is less or equal to 2 and greater or equal to -2, then function value is defined 4. So f of -2 is just equal to 4. So we have this. So left hand लिमिट और राइट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 2, तो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, that will be equal to limit this is your x tending to -2 minus of, ये माइनस नोटेट करता है, we are tending towards -2 from left side, okay, of the function। And in this case, when x is less than -2, we are taking function is x square, so it will be limit x tending to minus of 2 of minus this function will be x square। एंड हमने बताया था कि अगर पॉलिनोमियल है तो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई हेयर इन द प्लेस ऑफ x इज माइनस, तो -2 का होल स्क्वायर एंड यू विल गेट 4। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव सॉरी राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -2, तो दिस इज -2, ये प्लस हो जाएगा और फंक्शन जब x इज ग्रेटर देन -2 है तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 4 है। when just exactly with the point -2 and x is greater than -2, then value of the function is 4. So this is when this is limit uh, x tending to minus of 2 plus and the value of the function is 4, so it will be equal to 4। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो तुम्हारे पास क्या है, 4 है, और फंक्शन की वैल्यू भी 4 है उस पॉइंट। ओके, तो दिस विल बी व्हाट
So you can see here, since left hand derivative, left hand not derivative, left hand limit is just equal to right hand limit, and that is equal to value of the function at -2, and that value is 4. Okay, at x is equal to -2. So this implies that we can say fx is continuous at x is equal to, फंक्शन x इक्वल टू -2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस. ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिबिलिटी की x बराबर -2 पे. तो फॉर डिफरेंशिबिलिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और लेफ्ट हैंड. तो राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश ऑफ -2 कैसे लिखेंगे, लिमिट दिस इज योर h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर f ऑफ हो जाएगा -2 प्लस ऑफ h and minus f of -2 divided by h. This is your right hand derivative, तो प्लस h. तो -2 से अगर बड़ा हम रख रहे हैं तो वहां पर हम 4 रखेंगे, तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई h. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0. तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव है एट -2 इज 0 आ रहा है. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, एंड left hand derivative f of -2 is just equal to limit h tending to 0, and this is f of -2 minus h, and minus f of -2 divided by minus h. तो यहाँ क्या मिलेगा, this is limit h tending to 0, and this will be -2 minus of h का whole square, because when h is less than -2 तो x square function defined है, and that is equal to 4 and divided by h. Okay, अब इसको आप ओपन कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, this will be your 4 and plus of h square, and this is plus of 2 of 2 to the 4, this is your 4h minus the 4 divided by और माइनस करते, ठीक, इससे ये कैंसिल, ठीक है, ये माइनस कैच रहेगा. तो फ्रॉम हेयर यू कैन सी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप यहाँ से आप h बाहर ले लो, तो जब h बाहर ले लोगे तो h प्लस का 4 बच जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस. तो इस h से आप इस h को कैंसिल करोगे, और व्हेन h इक्वल टू 0 पुट करोगे तो हमारे पास ऊपर 4 बच जाएगा, नीचे माइनस का 1 तो है ही है, तो इट विल बी माइनस ऑफ 4, दिस विल बी माइनस ऑफ 4. तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -2 जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो तो 0 आ रहा है, बट जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो तुम्हारे पास माइनस का 4 आ रहा है. इसका मतलब डेरिवेटिव जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है, इट मीन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं. ओके, तो यू कैन सी, अगर हम इसको बोल देते हैं दिस इज योर फर्स्ट वन इक्वेशन, योर सेकंड वन इक्वेशन, तो फ्रॉम हियर कह सकते हो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we have this is right hand derivative at this point -2 is not equal to left hand derivative at the point -2. This implies function this implies this fx is not differentiable at x equals to. ओके, अब हम बात करते हैं x इक्वल टू 2 पे, 2 पॉइंट थे, तो x बराबर -2 पे तो क्लियर हो गया कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है.
तो x बराबर -2 पे बात कर लेते हैं। x बराबर 2 पे x इज इक्वल टू 2। x बराबर 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी 4, क्योंकि फंक्शन जो डिफाइंड है वो ऐसे डिफाइंड है कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4 व्हेन x इज लेस और इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर इक्वल टू माइनस। ओके, तो इक्वलिटी ऑफ x बराबर 2 पे इन फंक्शन की वैल्यू 4 है। आइए जरा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं पॉइंट 2 पे। तो दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू 2 minus the function will be value will be 4। फंक्शन की वैल्यू 4 होगी उस पॉइंट पे व्हेन x इज लेस देन 2। 2 से -2 से और 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 4 रहती है व्हेन x इज बिटवीन -2 to 2। तो ये 4 आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए दिस इज लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 2 प्लस function again x square। Okay, so this will be 2 pi square and you will get 4 again। So it means that you can say since left hand limit is just equal to right hand limit is just equal to value of the function at the point 2 is just equal to 4। So this implies that you can say function, thus you can say this effect is continuous at x is equal to फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इक्वल टू 2। अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। और डिफरेंशियबिलिटी राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं पॉइंट 2। तो यू कैन जस्ट से दिस इज द लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 2 plus h minus f2 divided by this is your right hand derivative। तो यहाँ पर आप पुट करिए दिस विल बी लिमिट दिस इज h टेंडिंग टू 0 f of 2 plus h। 2 plus h मतलब वी आर जस्ट इन एक्स स्क्वायर। फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर व्हेन ग्रेटर देन 2। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 प्लस एच का होगा। तो यहाँ पर पुटेंगे एक्स स्क्वायर तो इसमें 2 प्लस एच रखा जाएगा होल स्क्वायर और इसका वैल्यू तो 4 है डिवाइडेड बाय एच। आप इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। दिस इज योर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। दिस इज योर 4 प्लस का एच स्क्वायर एंड दिस इज प्लस का 4h माइनस का 4 डिवाइडेड बाय एच। इससे कैंसिल और इसका अगर हम h बाहर ले लेते हैं तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसमें से आप h बाहर ले लीजिए तो अंदर बचेगा h प्लस 4 है ना डिवाइडेड बाय h। इस h से h कैंसिल, h बराबर 0 पुट करेंगे तो विल गेट 4 है ना। तो इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो तो हमारे पास 4 आ गया। लेट अस सी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा। एंड दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट 2 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड f ऑफ दिस इज 2 माइनस h माइनस f2 एंड डिवाइडेड बाय माइनस। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर 2 से लेस है हमारे पास x का वैल्यू तो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 4। 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h एंड इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज 4। तो यहाँ पर भी दिस implies दिस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at 2 is not equal to right hand derivative। तो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं। तो दिस implies fx is not differentiable fx is not differentiable at x is equal to x बराबर 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, x बराबर -2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था बट ये दोनों पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो यू कैन से कि थ्रू आउट द डोमेन थ्रू आउट द रियल नंबर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -2 एंड अदरवाइज इट इज डिफरेंशिएबल। क्लियर। तो दीज आर थिंग्स टू डू है ना, ऐसे हमें करना होता है चीजों को। तो आई होप सो की चीजें समझ में आ रही हैं कि कैसे हमारे पास चीजें काम कर रही हैं।
तो एक प्रॉब्लम और है एग्जाम्पल में, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6, so that the function is defined like this. This is your fx. So the function fx, and that is defined like this. This is x to the power p cos 1 upon x when x is not equal to 0, and this is 0 when x is equal to, है ना, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है। तो इसको शो करना है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस at x is equal to 0 if p का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, p is the positive value, and differentiable at x is equal to 0 if p is greater than, अगर p पॉजिटिव है तो कॉन्टिन्यूअस है, उतने से कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल तभी होता है जब p इज मोर देन 1। ओके, so this is the function, this is important function actually, sometimes they ask in competitive exams. So the fx equals to x for p cos 1 upon x is a function when x is non-zero and value is 0 and x is equal to 0. So let us see first continuity. So for continuity, at x is equal to 0.7. So we have left hand derivative, right hand limit, sorry. तो राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं आर एच एल, दिस इज द लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है एफ 0 प्लस एच, है ना, इसे लिखा जाता है राइट हैंड लिमिट, इसे लिखा जाता है तो द फंक्शन 0 प्लस एच व्हेन एक्स इज नॉन जीरो वी आर टेकिंग दिस फंक्शन, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो विल हैव लिमिट h tending to 0, this will be your h की पावर p and this is the cos of 1. अब इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि we are going to find this. तो h है, h की पावर p है और this is your cos 1 upon, ध्यान देना when you h tending to 0 this cos 1 upon h, yeah, 1 upon h will be tending to infinity, then cos 1 upon h whatever we get that will be some finite value. ठीक, अब जरा एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हमने कहा कि दिस p इज निगेटिव, थोड़ी देर के लिए p इज निगेटिव वैल्यू, है ना, p निगेटिव होगा तो h की पावर समथिंग निगेटिव कांस्टेंट वेयर k इज सम पॉजिटिव वैल्यू, तो इस केस में दिस विल बी 1 upon 6, and in this case if you are putting h is equal to 0 this will be becomes infinity, है ना, this becomes look this whole thing will be infinity, or if there's an infinity into finite you will get infinity, तो उस केस में हमारे पास इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट अगर हम x को पॉजिटिव लेते हैं तो क्लियरली वी कैन एबल टू से कि इसका जो लिमिट है वो क्या आएगी, 0 आएगी, है ना, तो क्लियरली वी कैन से कि इस लिमिट इज 0, तो व्हेन दिस p इज पॉजिटिव, मतलब उसकी जो पावर है, जो इसका एक्सपोनेंट है वो अगर पॉजिटिव है तो हम उसके हमें डिनोमिनेटर में वो हमारा नहीं जाएगा, है ना, दैट विल बी, तो h टेंडिंग टू 0, so this will be tending to 0 and this will be some tending some finite value and this product will be become 0.
when p is negative, this h will be in the denominator, और डिनोमिनेटर में अगर h है तो हमारे पास इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, फिर हमारे जो है फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं। ओके, so this is the thing. Similarly, let us see about राइट लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या निकल रहा है, उसे भी जरा देख लेते हैं, फिर दोनों को साथ साथ में। तो दिस इज लिमिट h tending to 0 and this is f of 0 minus h. So this will be limit h tending to 0 and this will be minus of h की पावर p and cos minus थीटा, cos थीटा होता है, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम लिखेंगे भी -1/h तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज लिमिट h tending to 0 -1 की पावर p and this is your h की पावर p and this is your cos of 1। क्लियर? तो क्लियरली अगर हम यहाँ पर p पॉजिटिव लेते हैं तो हम क्लियरली कह सकेंगे कि ये 0 की तरफ टेंड करेगा। तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग से कि इफ p इज पॉजिटिव, so we can say this this limit, we can say right hand limit will be equal to 0 and that is also equal to left hand limit. So this will be tending to 0 when p is positive and this is also tending to 0 if p is positive. Okay, and that is the value of the function at the point 0. f0 की वैल्यू भी 0। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। So this implies fx is continuous. fx is continuous at x is equal to 0। 0 पे हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं। फॉर डिफरेंशियबिलिटी at x is equal to 0 we have, for differentiability at x is equal to 0 we have right hand derivative अगर हम निकालते हैं at 0, so we can write like this, limit h tending to 0 f of 0 plus h minus of 0 at 0 divided by h। तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो दिस इज लिमिट h tending to 0 fh minus f0 divided by h। अच्छा, यहाँ पर fh रखना है, तो दिस विल बी लिमिट h tending to 0, दिस इज h की पावर p, h की पावर p and दिस इज योर 0 एक्सप्रेशन। हमारे पास और भी था ना h की पावर p और साथ में था cos 1 and minus 0 divided by h। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि h ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, दिस इज योर h की पावर p minus 1 and this is cos of 1। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम h बराबर 0 हमारे पास यहाँ पर h पर p minus 1 0 कब होगा, when this p minus 1 is greater than 0, या you can say this p is greater than 1, then it will be equal to 0 for this। ओके, तो जो राइट अगर हम इससे कम लेते हैं निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा एक्सपोनेंट। अगर हम p को 1 से कम लेते हैं तो एक्सपोनेंट इसका निगेटिव हो जाएगा और फिर h निगेटिव डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये इसे इंफिनिटी कर देगा, फिर वी विल नॉट गेट एनी फाइनाइट वैल्यू। so it means that at least p should be 1, या कह सकते हो ग्रेटर देन। अगर अच्छा इक्वल टू 1 पे भी काम नहीं चलेगा, अगर तुमने p बराबर इक्वल टू 1 ले लिया, इसका मतलब है कि ये h की पावर 0 हो गया, h की पावर 0 मतलब 1, देन cos 1/h डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास p शुड बी ग्रेटर देन, या कह सकते हो p minus 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड देन p इज ग्रेटर देन 1 फॉर वी गेट द राइट हैंड डेरिवेटिव 0। ओके, सिमिलरली अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं एंड दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f dash of 0 just equal to limit h tending to 0, this is your f of 0 minus h
माइनस का f0 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ h. क्लियर? So this will be equal to, this is your limit, this is your h tending to 0, and यहाँ पर हमारे पास माइनस का h रखेंगे तो माइनस h की पावर p इंटू कॉस -1/h and divided by माइनस. दैट इज ओके. यहाँ पर हम बात करेंगे, दिस इज योर लिमिट h टेंडिंग टू 0, -1 की पावर p बाहर ले सकते हैं, दिस इज योर h की पावर p, एंड कॉस तो माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इसको 1/h भी लिख सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ h की पावर 1 है यहाँ पर. तो यहाँ पर जब h को ऊपर ले जाएंगे तो दैट विल बी व्हाट, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, नेगेटिव माइनस का नीचे था, तो यू कैन आल्सो राइट -1 की पावर p -1, यू कैन राइट इफ यू वांट टू h की पावर दिस p -1 is here and cos this is 1 upon. अब यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जीरो की तरफ टेंड करेगा when this p -1 is positive, p -1 is more than p 0, मतलब positive 0. So this will be tending to 0. This will be 0 for this p -1 is greater than 0. This implies yeah, you can say this p is greater than 1. So function gives zero derivative when p is greater than 1. It means it will be differentiable. When p is equals to 1 या फिर p is lesser than 1, it will does not exist. तो अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें एग्जिस्ट कब करेगा, when p is greater than 0 and it will be 0, है ना. वो डेरिवेटिव आएगा क्या, 0. तो इट मीन्स दैट कि तुम्हारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं किस पे, when p greater than 1, it means function is differentiable when p is greater than 1. So we can say like this, if this p -1 is greater than 0, or we can say if this p is greater than 1, we observe this is right hand derivative at 0 is just equal to left hand derivative at 0, and that is equal to 0, है ना. मतलब वो 0 वैल्यूज होते हैं. दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एफ एक्स. ओके. तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल्स जो हमने कराए हैं, जो हम लोगों ने आपके टेक्स्ट बुक से प्रॉब्लम्स को करी है, वो समझ में आया होगा आपको. और सभी लोग इसको नोटबुक में प्रॉपर तरीके से, जैसे हमने एक एक चीज हमने लिखा है, उसको आप नोट करिएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, तो डेफिनेटली आप अच्छे से कर पाएंगे चीजों को. ओके. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग फ्रॉम हेयर. आप अपने कंटेंट, अपने सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए. बाकी और भी अपने फ्रेंड सर्किल में लोगों को शेयर कर दीजिए. अगर हम यहाँ पर मैथमेटिक्स शेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक अगर पहुँचेगा, दैट वुड बी गुड. ओके. थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग.